हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज प्रणव इन यूएसए एंड गाइस आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव एंड इट्स गोइंग टू बी अबाउट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की थी ड्यूरिंग माय मास्टर्स एप्लीकेशन प्रोसेस इन 2023. सो गाइस आपको पता है कि जैसे ही एडमिट मिल जाता है यूनिवर्सिटी से, सो द नेक्स्ट थिंग इज टू स्टार्ट अरेंजिंग फॉर फंड्स. एंड फंड्स का नाम सुनते ही मोस्ट ऑफ अस दे गो फॉर एजुकेशनल लोन. सो मैंने भी एजुकेशनल लोन लिया था एंड दिस इज अ प्रोसेस विच इज सपोज टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट फॉर सम रीजंस इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग एज वेल. सो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले एंड वी आर गोना लाइक स्टार्ट विथ लाइक बेसिक थिंग्स लाइक जैसे कि दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाता है कि कौन से बैंक से लेना है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, फिर कंपैरिजन भी करना है. उसके बाद में हमारे दिमाग में ये भी चीज़ आ जाती है कि मेरे दोस्त ने तो उस वाले बैंक से लिया था, सो शुड आई ऑल्सो गो फॉर इट. मे बी येस, मे बी नॉट, मे बी इट्स योर चॉइस. उसके बाद में चलो बैंक डिसाइड कर लिया, उसके बाद में कितनी बार तो बैंक जाना पड़ेगा बिकॉज एवरी सिंगल टाइम दे विल फाइंड अ रीज़न फॉर यू टू कम टू द बैंक एंड कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. वेरिफिकेशन पर्पस होगा या तो फिर कुछ मिसमैच होगा. सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिकली क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, व्हाट इज़ द रियलिस्टिक टाइमलाइन, आपको क्या क्या चीज़ें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखनी चाहिए, किस टाइप के आपको लोन्स मिलते हैं. एंड जस्ट इन केस अगर आपको ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं चाहिए एंड यू वांट समवन की जो आपके लिए सारी चीज़ों का टेक केयर करे, सो वी ऑल्सो हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट एंड उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी. सो शुड वी स्टार्ट? वी शुड. सो गाइस लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये एजुकेशनल लोन वाला पार्ट आधा कहाँ पे पूरी जर्नी में. सो आपने सारी एग्जाम्स दे दी है, जिगारी, आइल्स, ऑल दी एंट्रेंस एग्जाम्स. उसके बाद में अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर लिया. यू गॉट दी एडमिट लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू अप्लाई फॉर I-20. I-20 एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिकली ये लिखा होता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिट मिला एंड यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स टू लाइक सस्टेन बाय योरसेल्फ फॉर एटलीस्ट अ ईयर. सो इस वाले I-20 वाले डॉक्यूमेंट में you have a certain amount which is given by the university for a particular course. So in my case, environment was $60,000 and it includes your insurance, it includes your tuition fees and it also includes your living expenses. So in order to get this I-20, you need to show personal funds. So it could be in the form of like, you know, you can show your assets, you can show your like bank balance, or sometimes if you do not have enough funds, so you can also show a loan sanction letter. So this is where the loan part comes into the picture. So now let's talk about कि basically इसमें क्या क्या type के expenses are covered and कौन से type के expenses are not covered. So let's take a look at it. So guys, let's talk about कि कौन से type के expenses are usually involved in the educational loan. So the first one is the tuition fees, which forms the major chunk of your educational loan, and you can use it to pay for your course fees. So you can be pursuing undergraduate degree, postgraduate degree or a doctoral degree. So कोई भी degree हो उसके लिए basically you can use the educational loan to pay for your course fees. Second one is the living expenses, जिसमें basically आता है your house rents, transportation and meals. Third is your study related expenses, जिसमें आता है like you're working on some project, फिर हो गया there is some sort of like internship related project, research related project. So again you can use the educational loan amount to pay for such expenses. And lastly I would say traveling related again. So traveling related expenses is usually not included in this loan amount, but you can of course make a request for it. So ये चार चीज़ें which basically are like usually included in the educational loan. Now let's talk about कि कौन सी expenses are not covered as a part of the educational loan. So the first one is like visa related expenses, जिसमें हो गया कि if you're like booking a visa slot, so जो expenses आते हैं उसमें they are not really included. Then second is like you know entrance related expenses, like you must be giving GRE, IELTS, TOEFL. So again जो इनकी entrance exam की जो fees होती है, again that cost is not included in the educational loan part. And lastly there's one more which I'm missing, which is basically applying for university. So again when you're like applying to universities, again you have to pay certain sort of charges. So again those fees are again not involved in the educational loan amount.
So guys, let's talk about the secured loans first. So ये वो वाले loans हैं जिनमें you require a collateral. So now collateral can take various forms. It can be your fixed deposits, property, insurance policy, mutual funds, and ये वाले टाइप के लोन में the approval period is a little longer because इसमें बैंक को actually they have to verify जो भी आप collateral present करते हो. And also a good thing about this type of loans is कि इसमें जो amount आपको मिलेगा that will be much more higher as compared to the unsecured. इसमें interest rates will also be lower. उसके बाद में you might also get a free moratorium period, and lastly इसमें जो repayment period होगा वो भी बड़ा होगा as compared to the unsecured ones. And people usually go for the secured ones जब की जो amount का requirement है that is a little higher, and it could be like up to 1 CR or 1.5 CR. So again it depends on कि आप क्या collateral present करते हो. So depending on that you'll get an amount. So guys, the next type of loan is the unsecured ones, जिसमें basically आपको कोई collateral की ज़रूरत नहीं होती है, and इसमें the amount which you ask for it's a little bit lower as compared to the secured ones, and इसमें generally the interest rate is a lot higher as compared to the secured ones. And जो इसमें जो loan sanction के जो decision होता है that मोस्टली डिपेंड्स ऑन कि आपका को एप्लीकेंट कौन है और इसका इनकम कितना है, उसका सिबिल स्कोर कितना है. सो अगेन इसमें जो अप्रूवल रेट होता है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दिस थिंग. सो इट माइट बी लिटिल लोअर एज कम्पेयर टू दी सिक्योर्ड वंस. एंड इसका एक एडवांटेज हुआ है कि अगर आपका लोन का रिक्वायरमेंट्स थोड़े कम है तो यू कैन गो फॉर दिस वन. एंड इसमें द टाइम फ्रेम जिसमें ये आप लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपको लोन मिलता है इट्स लिटिल शॉर्टर बिकॉज इसमें जो पेपर वर्क का प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा कम होता है एंड इट्स मच मोर सिंप्लीफाइड. सो गाइस, लोन टाइप्स तो डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स डिस्कस जनरली क्या रीजंस की वजह से आपका लोन एप्लीकेशन माइट गेट रिजेक्टेड. सो द फर्स्ट वन इज इनएडिक्वेट कोलैटरल वैल्यू. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, लेट्स से अगर आपको लोन चाहिए 60 lakhs का एंड यू आर सबमिटिंग अ कोलैटरल ऑफ 50 lakhs. सो इन दिस केस जो आपका कोलैटरल है इट इज़ नॉट एबल टू कवर the loan amount, and in this case your loan application might get rejected. The second type of reason is collateral type, and in this case let's say generally सारी banks सारे type के collaterals accept नहीं करती है. They generally accept the residential real estate like houses, apartments, and in some cases if you're like submitting your property as an agricultural land or an open land with no boundaries. So in that case again it could be a reason because of which आपका loan application might get rejected. Third is having a poor academic performance. Let's say आपका 10th standard, 12th standard के board exam you have just scored like 40-50%, and while pursuing engineering you have 3-4 backlogs, आप एक साल fail हो गए. So again these are some of the red flags because of which again like your loan application might get rejected. Fourth reason is having a low CIBIL score. So again in case of if you're going for the unsecured loan, so in that case आपके co-applicant का profile again it's of of utmost importance. And अगर उस बंदे का CIBIL score कम होगा, let's say if it's like less than 650, then again it declines the chances of like getting the loan. And last one is again I think incomplete documentation. So again उस वाले इसमें basically what happens is let's say कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया है बट यू आर मिसिंग आउट ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लाइक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या फिर आपकी सैलरी स्लिप्स. सो अगेन बिकॉज ऑफ सच रीजंस अगेन इट माइट गेट लाइक रिजेक्टेड, या तो फिर यू विल हैव लॉट्स ऑफ बैक एंड फोर्थ वर्क जिसमें बार बार आपको बैंक जाना पड़ेगा. सो अगेन दीज आर 5 of the reasons because of which generally your loan application might get rejected. So guys, next time make sure that before applying for a loan application आप आपका collateral type check कर लो, talk to the banks and एक बार उनसे पूछ लो before applying कि ये acceptable है या नहीं. Check for your property's market value beforehand. इसके बाद में monitor your academic performance जो आपके हाथ में है. You should also be ready with the supporting documents. You should also monitor your CIBIL score and आपके co-applicant का. And lastly
you should have all the documents ready. So इसके लिए एक checklist का link मैं description में डालने वाला हूँ, and apart from that I'll be also having one more link जिसमें basically मैं ये बताऊँगा कि कौन सी banks secured loans provide करती है, कौन सी banks unsecured loans provide करती है. So now let's move on to the next section. मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फीड कर दी है इस वीडियो में. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या क्या रीजंस की वजह से आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है. उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस किस टाइप के आपको लोन्स मिलते हैं. एंड उसके बाद मैं आई ऑल्सो टोल्ड यू कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं. एंड इट्स अ लॉट फॉर अ person to like process, right? I mean, it's too much of information, but कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्या अगर like you know there was a platform जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है. They can compare the banks for you, interest rates, सारा कुछ you know सारा document checklist आपके लिए maintain करता, सब आप आराम से बैठ के ट्रैक करते. So कितना अच्छा होता. So guys, ऐसा एक मुझे प्लेटफॉर्म फाइनली मिल चुका है. मेरे टाइम पे नहीं था, बट अभी मुझे एक मिल चुका है. Recently came across it and I was like very much fascinated by it. Because I mean यार सब कुछ आपके लिए करता है, and that too of you know free of cost. So और क्या चाहिए? So are you guys excited to know about it? Do you want to know? Do you want to know? Do you want to know? So guys, this amazing platform which has been existing for so long और हमें पता भी नहीं था इसके बारे में, उसका नाम है GyanDhan. It is India's first education financing marketplace. And अभी आप तो यही बोलोगे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, इसमें से डिफरेंट क्या है, हाउ कैन वी ट्रस्ट दिस प्लेटफॉर्म. सो गाइस लेट मी टेल यू समथिंग. आपको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, which is the language of numbers and stats. So let me tell you what their numbers have to say. So far they have helped 25,000 students. They have disbursed loan of amount 8,000 CR so far, and they have also partnered with 3,400 universities. So guys, ऐसा क्या है इसमें? आप अब तो अभी मतलब ठीक है यार, नंबर्स भी चलो यार अच्छे ही नंबर्स है. सो व्हाट नाउ, मतलब क्या ऐसा क्या है इसमें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट गोइंग टू दिस बैंक दैट बैंक फॉर लाइक क्वेरीज, फॉर यू नो लाइक कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कि इसका कितना इंटरेस्ट है, उसका कितना इंटरेस्ट है. नो, नथिंग, राइट? बिकॉज ऑन दिस वन सिंगल प्लेटफॉर्म आपको सारे बिग लेंडर्स मिल जाएंगे, ऑल द banks, public, private, NBFCs, international lenders, everyone. On one single platform, you can compare their interest rates. Second thing, everything is going to be online. Everything is tracked online. आपको documents के भी बारे में you don't have to worry about it कि यार मुझे वापस से 2-3 चक्कर और लगाने पड़ेंगे because this document was missing, that was missing. Again, they provide a personalized checklist. So your entire document ka part is going to be streamlined. It's going to be you know like there are not gonna be any more complications about it, so you don't have to worry about the documents too. And lastly guys, it is going to be entirely free, not a single penny. So now let's try to understand how this platform works, what's their process, what's their approach, and what they have for you. So guys, let's talk about this process. It's a 5-step digital process. So उसमें first step है basically to check for loan eligibility. So उसमें क्या करना है, आपको उनके वेबसाइट पे जाके और थोड़े बहुत क्वेश्चंस का आंसर करना है, which will ask for like basic details about your co-applicant and applicant, जिसमें आएगा कि आपको कितने लोन का रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में आप क्या collateral प्रेजेंट कर रहे हो, उसका अमाउंट कितना है, उसके बाद में it will have questions about your academic background, जिसमें it will ask you कि आपके पास कितनी years का एक्सपीरियंस है. So like basic questions, and based on which वो आपको बताएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं. सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है. सो गाइस, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस फीचर बिकॉज अगर आप एप्लीकेशन फेज में अगर आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं मिला है, सो टिल दैट टाइम आप ये चेक कर सकते हो कि आप लोन के लिए एलिजिबल हो या नहीं. अगर इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर इट, देन यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट यू विल क्वालिफाई एंड उसमें आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा. सो ज्ञानधन्स लोन एलिजिबिलिटी AI विल प्रोवाइड यू विद ऑल दीज डिटेल्स. एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो पूरा प्रोसेस होगा दैट विल बी लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ट्रांसपेरेंट. एंड सेकेंडली, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे अप्लाई कर चुके हो, कोई और अपने बैंक शॉर्टलिस्ट कर लिया, सो इससे क्या होगा बेसिकली कि यू विल बी एबल टू लाइक यू नो कंपेयर कि व्हाट इफ लाइक आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर लोन अमाउंट इससे ज़्यादा जहाँ पे मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया है एंड एट अ बेटर लोअर इंटरेस्ट रेट. सो इससे यू विल बी एबल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. सो दोनों केस में मतलब अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई किया है, सो आई थिंक यू शुड लाइक डेफिनेटली ट्राई विद दिस फीचर फर्स्ट.
The next step is free counseling. So what GyanDhan will do is basically they will assign a loan officer to your case जो आपकी पूरे application में help करेगा. He'll help you in exploring all the possible options that you guys have for your case. Third step in this process is to upload documents and I mean जब मैं ये चीज़ कर रहा था मैं कितनी बार तो बैंक गया रहूँगा because every single time some document was missing क्योंकि उनको खुद को पता नहीं कि कौन से documents चाहिए रहेंगे मुझे and because of which कितनी बार तो मैंने बैंक के चक्कर लगाए हैं एंड दिस इज़ वेयर GyanDhan comes into the picture because they will be providing you with a personalized checklist, so no more guesswork. आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे एंड इन सम केसेस दे विल ऑल्सो अरेंज फॉर डोर स्टेप पिकअप. मतलब सोचो कि अगर आप बिजी रहोगे एंड आपके घर पे आके कोई आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा एंड दे विल कैरी आउट द प्रोसेस फॉर यू. सो आई मीन कितना ईजी हो जाएगा, राइट? सो दैट इज़ द थर्ड स्टेप. Fourth step is the negotiation part and इसमें आपको कुछ नहीं करना है. GyanDhan will take care of everything because they have already partnered with so many leading lenders, be it public banks, private banks, NBFCs, international lenders. So आप जिस सोचो मतलब अगर वो आपके लिए negotiate करेंगे and even if it's like lower by 0.5%, you will be able to save lakhs of money. आपको कुछ नहीं करना है. They'll take care of everything. And the last stage of this digital process is disbursement. तो ये पता कैसे चलेगा कि डिस्बर्स होने वाला है नहीं होने वाला है? So guys, they will provide you with a dashboard जिसमें आपको आपका लाइफ स्टेटस पता चलेगा कि आपके लोन का स्टेटस क्या है. If it's applied, if it's under verification, if it's disbursed, or if it is sanctioned. So there is no more like guessing, no more running behind the managers, no more calling, no more blind waiting. आपको सारा स्टेटस ऑनलाइन दिख जाएगा. So guys, मैंने आपको ये तो बता दिया कि how GyanDhan works. Now let me tell you guys कि how is it different from the other platforms. So first of all, multiple lenders in one place. आपको सारे बैंक्स का कंपैरिजन एक ही जगह पे दिख जाएगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे, be it पब्लिक, प्राइवेट, NBFCs एंड इंटरनेशनल बैंक्स. आप सारे बैंक्स का लोन रेट एक ही जगह पे कंपेयर कर सकते हो. उसके बाद में सेकंड थिंग इज फ्री सर्विस. ओह माय गॉड, दिस इज लाइक द बिगेस्ट पॉइंट गाइज. यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी, अ सिंगल रुपी. आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है. आई मीन अगर ये मुझे पता रहता मेरे टाइम पे, अगर मुझे पता रहता आई वुड हैव लाइक डेफिनेटली यूज्ड इट क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितने 100 लोगों से पूछे अलग अलग चीज़ें. ये बैंक में लो, वो बैंक में लो, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन बट दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर यू. आई मीन डोर स्टेप पे आके आपकी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट. आई मीन आई डोंट नो इससे बेटर सर्विस और कौन क्या ही प्रोवाइड करेगा विथ लाइक स्पेंडिंग 0 रुपीज़, राइट? थर्ड थिंग इज ट्रांसपेरेंसी. मतलब आपको ये भी पता रहेगा कि एवरी सिंगल टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या आपके लोन का स्टेटस है. इफ इट्स अंडर अप्लाइड, इफ इट्स अंडर वेरिफिकेशन, डिस्बर्स होने वाला है क्या है. मतलब देयर इज लाइक एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी. ऐसा नहीं कि आपको मैनेजर को कॉल करके पूछना पड़ेगा भाई मेरा लोन का क्या सीन है, या मुझे बैंक जाके पूछना पड़ेगा कि मेरा होने वाला है नहीं होने वाला है. सो देयर इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी. उसके बाद में पर्सनलाइज चेक लिस्ट. मतलब मुझे बताओ आप जहाँ पे भी आप जाओगे, कोई भी बैंक से लोगे, सो फिर ऐसे कभी हुआ है कि उन्होंने एक ही बार में बोला है कि ये सारी 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमें चाहिए, ये एक ही बार में लेके आ जाओ, आपका प्रोसेस फिर लाइक स्मूथली हो जाएगा? नहीं, नॉट अ सिंगल टाइम. देयर इज अ लाइक एब्सोल्यूट नो चांस कि ये होने वाला है बिकॉज आपको 10 बार तो जाना ही पड़ेगा एंड एवरी सिंगल टाइम कुछ ना कुछ तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ ये मिस हो गया था यार, गलती से याद नहीं रहा. सो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद पर्सनलाइज्ड चेक लिस्ट. लास्टली, नेगोशिएशन पावर. आपको जो मर्जी, आपको जो बैंक में जाना है जाओ. इफ़ यू नो कि हाँ मेरा यहाँ पे कोई पहचान का, आई विल गो टू दिस बैंक. बट द प्रॉब्लम है कि अगर आप अकेले जाओगे आपको वो लोन अमाउंट एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा. बट व्हाट GyanDhan विल डू इज बेसिकली दे हैव दिस स्ट्रेंथ, दे हैव दिस पावर, सॉरी, बिकॉज दे हैव द स्ट्रेंथ. बिकॉज वॉट इज हैपनिंग इज कि आप यहाँ पे अकेले जा रहे हो बट यहाँ पे GyanDhan इज नेगोशिएटिंग ऑन बिहाफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. सो उसकी वजह से GyanDhan has the power and not the bank. So GyanDhan gets to negotiate the interest rate for you guys and there's a heavy chance कि मतलब आपको सेम लोन अमाउंट एक कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा. सो मतलब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें तो बता दी है. सो नाउ इट्स अप टू यू गाइस. आई मीन अगर मैं होता तो मैं तो पक्का यूज़ करके देख लेता. सो जस्ट लाइक यॉकेट, जब मैंने आपको बताया था कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको विदाउट स्पेंडिंग एनी एनीथिंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है ट्राई करने के लिए. सो सेम थिंग अप्लाइज हियर. मतलब आई डोंट रियली
think कि कोई ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करेगा, बट ज्ञानधन इज़ डूइंग सो. दिस वॉज इट. एंड मैं सारी इंफॉर्मेशन, सारी लिंक्स अपनी वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. सो डू ट्राई इट, डू ट्राई द प्लेटफॉर्म. लेट मी नो कि मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है ज्ञानधन के साथ में. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ट्राइंग दिस वन. सो go for it. And thank you guys for watching the video. Hope you liked it. Hope it was informative. And please like, share and subscribe.